leave the meeting, click on got it, and Yeah. yes, we are good to go. Yeah. Cool. Maybe I can just, I mean, everyone knows Love, but I'll just start with an introduction. Love Babbar is a YouTuber with over, I think, 320,000 subscribers. He recently left Amazon. He studied at MSUT Delhi. I think he's joining Microsoft. I'm not 100% sure. But yeah, he guides students. He makes roadmaps. He teaches. He has a few tutorials as well, I believe. And he has a really active Discord server wherein he comes and interacts with the audience, talks with people as well. So yeah, just over to you, Love. Yeah, the last one was not up to the mark. It is not that active. It becomes active only, when we take sessions. Other than that, it's kind of a ghosty place. So yeah, we can start. I can see that there are a lot of questions around the placement, roadmaps, and all. So we can start with the journey. When I started in college around around the end of the second year. We can start with that story. I know that most of you already know about it. We can start it. Any other suggestions like what we can discuss in this session? Other than that, if you don't I think you'd suggested should everyone learn to code as a topic. So maybe answer that question. Should everyone learn to code in the first place, or why should everyone learn? There are two things. There are a lot of pros and there are cons too. So when we talk about should everyone learn code, we can talk on these two lines only. So if we talk on the terms of pros, we have if you know coding, you can definitely make money. It can be both the job way, it can be the freelance way too. In the job way, you can if you can crack the big tech giant interviews, you can get a salary in around more than 1.25 lakh per month in any of the big tech giant. And also in case of startups, you can earn more than 2 lakh per month. These startups are not in those high numbers, but yeah, you can definitely get that too. In the freelance way, you can make some more. I have some friends from my class who are not doing the job. They're only earning through the freelance way only, and they are making in around 3 lakh per month or more than that. So that's one thing. Second thing is we can say if you have any idea in your mind and you want to convert that into a reality, you can do that too. So let's say idea came into my mind that I should make a platform where I can teach students, where I can publish the live sessions. So if I knew all the tech stuff beforehand, I can do all those things from basically from my end only. Or if I'm hiring a team, there are only few chances that they can misguide me, or they can provide me kind of wrong efforts. Like it may take around 8 months, or it may take around 9 months, because I have I have a rough idea around that how a particular thing should take. So that thing also helps when you are from a coding background. Shaping your ideas into reality. Also, one more thing, when you solve these kind of problems on these different website platforms, Geeks for Geek, CodeChef, Codeforce, Top Coder, and all, you get a problem solving mindset. So you always see different kind of problems, how you can solve that with different ways. So these are some of the things you can go for when we talk about the pros of coding. Your mindset, your thought process, your basically your salary, your monetary benefits, problem solving mindset. These are other things. And when we talk about the cons, one thing I usually say that there are a lot of channels basically dedicated towards this coding thing. And one thing that they are not doing good is, including me, that we are providing a channel to a lot of audience, that you can go for this SDE, software development engineer, this software engineer, software developer position, and you will get this. It may be the case that there are definitely there will be around more than there will be a lot of other positions too, other I can say other domains too, where a student can engage in and where a student can perform better if we compare it from the coding domain. So I think we are just narrowing that particular thing to a particular domain, that you should do this thing only. The exploration part is not there.
So that is the con that the coding community, including all the coding channels, is doing. Basically, they are restricting students from exploring all other domains in which they can do better. I think that's the one thing if we talk about cons. And I think that's the thing. Cool. I think you mentioned the wrong kind of guidance as well while learning to code. No, it's not wrong, but I think it is Not the impacting right in one. it is impacting in a wrong way. Yeah. How would, like, if you were to start to code all over again, how would you start? What would you learn? How would you go about learning code all over again? Yeah. So when I started, I was, kind of too late. So if I have to start again, I will start from the development part, like not from, going out on different platforms and solving different kind of questions, doing comparative coding and all. I will start from the development way. I will, learn a language which can help me to create any kind of product, or let's say the right way to learn these things and applying your skills and get something productive is to basically start working out. Let's say we want to make something like this Zoom platform where we can have live sessions. So definitely when you start, you don't have the exact clarity like what all components will be there, what all technology will you be using. So what you will do is you have a rough idea that I'm going to build something like Zoom which has features like A, B, C, D and these things. Then you can start. While implementing things, you can learn the things on the go. So I think that's the way that I will be following, that in case I want to start again, or I get a chance to start again from the zero part, I will be starting from the development perspective, that I need to develop something, some projects that kind of provide me a sense of fulfillment, that I have developed something useful, not only for the resume part, something that can be used by a real audience out there. That will be the thing, because learning DSA and solving questions and getting a placement, that thing at max will take around 6 months only. So that can be done anytime. Yep. And what about, can you just, I know you have made, I think, a couple of videos about this, but can you just walk us through how you got through the interview phase or the placement phase of your college and eventually got into Amazon as well? Yeah. So I can start with the internship journey. So when the internship season started, I just had completed my online DSA course. At that time, I only knew about all these data structures just from upar se. And then the internship season started. Firstly, due to lack of we can say in internship season, around from 900 students, only 150 got internship. So the percentage of the CGPA bar was quite high. So due to that, I was not able to get shortlisted to most of the companies. There were some, but after giving their online test and one interview in the entire internship season, I was only able to get one interview only. So I got to know that थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, से 2 महीने की पढ़ाई में नहीं होने वाला. And then my placement season got started. Before that, I was totally prepared कि अब तो भाई पहले हफ्ते में निकाल लेंगे, मजा आने वाला है, हद से 2-3 इंटरव्यू देने पड़ेंगे, हो जाएगा. But things are not that easy. If you are if you are in an SIT, you are competing with a lot of best and beast coders, so it was not that easy. After going through 1 month of rejections and 1 month of not shortlisting, I was able to get into a company called InvestNet Yardley. So it's company, I think based in US only, related to somewhat finance side. So I got my first placement there. The CTC was around 14.4, I think. So due to that, I was not able to, or I was not allowed to sit for other companies because every college has a kind of bar thing, that if you have some X CTC already allotted to your profile, then you cannot sit in another companies. So due to that thing, I was not able to sit in the further placement season. And after that, at the end,
around, I think, May, Amazon came to NSIT. It was that year when Amazon freeze their hiring because of overhiring in the last year, but they decided to visit NSIT at the end of the placement season. I was also not allowed to sit into Amazon, but yeah, I went to the placement cell, requested them to allow me to sit, and yeah, I got through that process. The interview process was quite, I can say, on the medium side, not that difficult, not that easy. The first round was based on a simple system design interview question. Second was based on recursion and backtracking. Third was fully dedicated to a project-based discussion round. And the fourth one, again, recursion and a question on DP. So yeah, but clearing Amazon, or I can say cracking Amazon, is not that of a big deal. If you have 6 months, if you can prepare for 6 months dedicated, you can crack it. After that, if you want to discuss around the new offers that I have right now. So I currently hold offers from SD2 from Flipkart and from Microsoft. So I can say that an interview for an SD1 profile and for SD2 profile is quite different. And I found that interview for the SD2 profile, for just my personal opinion, I found the interview for SD2 profile of Flipkart quite easier than the SD1 profile, because the rounds are more based on discussion rather than solving a particular question. In SD1 profiles, you are given a question, you have to code it in a certain complexity, and in the SD2 profiles, you are given a question, you have to design the solution, and whatever you design and whatever your interviewer is thinking may not match. So that is, more based on the discussion part, not on the correctness or the complexity part, I think. So I found it easier than the SD1 interviews. Well, now I think a lot of people like me. So I'm in second year. I'm 19 years old. Will graduate in like 3 years from now, I guess. So a lot of people in my college, my peers, and even myself, we don't exactly understand what SD3, SD2, SD1 means. Yeah. What is it like? How do you how do you differentiate between them now? Yeah. So we can start from the SD1 profile. So the SD1 profile is basically dedicated towards implementation of the things, right? From your seniors, from your managers, from your boss, you get a feature allotted to you that you have to implement this for this thing, right? Let's say I can give an example. My friend is working in Adobe, so he's working on the Premiere Pro team. So you can see a particular button in that particular editing tool. If you got chance, have you seen that? Which button are you talking about? Any random button on a particular editor tool window. Oh, yeah. So his team of around 9 to 10 people were working on that particular button's functionality to just enable that thing only. So as an SD1, you are expected to implement all this stuff provided to you. So implementation part is on to you. Designing is not expected from you at that level, but implementation is expected. Like whatever task is given to you, you should be able to deliver that. I can say with a minimal guidance. When we talk about the SD2 profile comes with, we can say, a share of 50% implementation and a share of 50% designing things, right? So let's say a new requirement came to us, or we have to build a new kind of system or service. And so now you have to decide both the things, the HLD part, like we will use this technology, we'll use this particular DB because of this reason, and how we are going to code it, how the data layer will look like, how the we can say the external services calling, the APIs, how those will look like, how we are going to separate the web stack, how we are going to separate that backend service, how we can say what all cloud structure we are going to use, whether Azure, AWS, GCP, right? So all these things, the 50% share is there, right? I'm talking in terms of Amazon only, because these are all the things that is followed there. And when we talk about the SD3 profile, so they are more involved in
designing of that project. I can say majority, in more than 90% of the time, is allotted, on the designing of the stuff. They are responsible for creating the highly scalable systems, highly available systems. So these things are expected from them. They are in the team, they are in organization, more to guide, more to provide advices, more to basically I can say design only, not for the implementation part. These are all the things, your designing part, your HLD part, LLD part, not implementation part. That part got increases when your level increases. I think in this way students can understand it better. Oh yeah, that's great. I think a couple of people in the chat were asking, is lead code enough for cracking any of these? Or I think a better question would be, which website would be sufficient to crack all of these? Yeah. So previously, I used to tell students that you can do GFG for strengthening your DSA part, and you should go for Code Forces level A and level B questions for cracking any kind of placement. Now, around 4 or 5 months back, I started lead code, and I found out that that platform is enough to crack any company, right? Whether it is Microsoft, Amazon, or even Google. If you are practicing lead code hard level questions, you will be able to crack the Google interviews. Recently, around 3 months back, I interviewed for Google. So the level was quite similar to the lead code hard level questions. So if you are just sticking only to the lead code and expecting a great placement, yeah, it will work. Cool. That's great. I think we should get people on the stage. Let them unmute. So just a couple of things that you guys are supposed to do. Get yourself. Just raise your hand. There'll be a button at the bottom that says raise hand, and there'll be a palm symbol. Just click on that, and your chances increase if you have your cam turned on. That's how we know that you won't shout in the camera and I mean, you can still shout, but still. And the third condition is that limit yourself to just one question, so that everyone gets a chance to ask a question. I'll unmute Ritik. Ritik, you can go ahead. Yeah, hi Babbar. Hi भैया. Actually, मुझे पूछना है कि like what is your current mindset and what is your future planning? Like now you resign, so what is your current mindset about it, and what is your future planning, and on which skill you are working right now, and what you feel most important skill one should learn if you want to earn money and be successful in life? Yeah. I can say the most important skill is the time management part. When you have a lot of things to do, when you are confused between ye karu, kya karu, when you are getting kind of negative vibes from other, that thing, the time management thing also helps there. So you need to always take care of your time management part. You need to always track your time, right? So whenever in a day you are doing some kind of things, you need to track them. Like कल मैंने ये काम किया, यहाँ मेरा इतना टाइम गया है, कल मैंने YouTube में कितना टाइम वेस्ट किया, मैंने 2 घंटे वेस्ट किया, कल मैंने Netflix में 1 घंटा वेस्ट किया, कल मैं पढ़ाई में कितना टाइम दिया, इतना टाइम दिया है. If we are tracking our time and after 1 week's interval, we just verify that भाई कहाँ गया मेरा टाइम. तो वहां पर एक पाई चार्ट बना के या फिर एक एक्सेल शीट बना के मैं देख पाऊं कि मेरा टाइम असलियत में कहाँ जा रहा है, तो मुझे सारी की सारी रियलिटी पता लग जाएगी. ठीक है, तो ये आप म्यूट हो यार. Yeah, most important skill is time management, and I'm literally like I'm not feeling I'm very productive because मुझे लगता है कि मेरा टाइम बहुत जगह पे निकल जाता है. So yeah, I think there is a concept called urgent and important 2x2 matrix. Please see that. I think that will help. And also there is a book, 7 Habits of Effective People, something like that. You can do that. You can go through that. So I think that will help. But I think that is the most important thing you should try to master. Not master, but you can try to improve. I think in this session, everyone is kind of struggling in this thing. But yeah, you can definitely try to improve, because
जब तक आपको पता नहीं लगेगा आप कहाँ लैग कर रहा है, इंप्रूव नहीं कर पाओगे ना आप। अब आपको पता लगा कि हाँ ये एक चीज है जहाँ पे मुझे काम करना है, तो अगर मेरे को 100 में से 10 मिल रहे थे तो मुझे 100 में से 20 मिल जाएंगे, 20-10 तो ज्यादा ही है। तो मुझे इस जी चीज का ध्यान रखना है कि यार एटलीस्ट मेरा टाइम जो है वो गलत जगह नहीं आता रहो, ठीक है। आपने एक और कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा यार, जिसमें कि चलो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पूरा वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, हटाते हैं उसको। सो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। सो आपका माइंडसेट क्या, और आप प्लान क्या कर रहे हो कि फ्यूचर में मुझे किस तरह से मतलब क्या करना है, और प्लानिंग क्या है। और एक चीज इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ कि जो यूट्यूब था, आप स्टार्टिंग में एक इंग्लिश ग्रामर और उससे रिलेटेड कंटेंट बना रहे थे, सो हाउ यू डेवलप दैट पार्ट, क्योंकि मैं सोचता हूँ मुझे करना है, लेकिन मुझे अभी नीश नहीं पता चलती किन में किस में बनाऊं। प्लस आपका टर्निंग पॉइंट क्या था यूट्यूब में, जब आपको वो हुआ कि आपको लगा कि ग्रोथ आ गई है, सो उस पे। यार स्टार्टिंग जब मैंने की तो वो कंटेंट बेस्ड है एसएसबी के ऊपर। सो व्हेन यू अप्लाई फॉर डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, सो यू हैव टू गो थ्रू अ 5-day इंटरव्यू प्रोसेस कॉल्ड एसएसबी। तो उसके लिए वो कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया था कि कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, आपको क्या क्या करना होता है। आज मेरे चैनल पे वो वीडियो पड़ी हुई है, मतलब सारी वीडियोस मैंने रखी हुई है कि पता चलना चाहिए कहाँ से स्टार्ट किया था, हटा के फायदा नहीं है। तो एट द टाइम आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट। बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बीइंग ऑप्टिमिस्टिक आर टू डिफरेंट थिंग्स, right? There are a lot of, there may be a lot of students here who are not comfortable to turn on their videos, right? So same was a thing with me. I was not able to I was not that comfortable to do a face cam video and tell the audience that yaar ye karo. When I was making those videos, I was not that comfortable. I was definitely a over optimistic person, but not that confident to show my face to audience out there, right? So when you do things 1, 2, 3, 4, 5, 6, there comes a stage when you become that confident कि ठीक है भाई अब तो यही शक्ल है, क्या कर लेंगे, यही है, दिखा देते हैं दुनिया को। तो विद दैट माइंडसेट आप घुस जाते हो। मुझे याद है स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी अमेजोन के टाइम पर, तो मेरे मन में था यार कि नहीं यार, मतलब दुनिया तो बहुत सुंदर है, हम तो सुंदर ही नहीं है। और दिमाग में ऐसे मतलब पागलों वाली बातें आती थी, ठीक है, इलॉजिकल एकदम। पर मैंने कहा स्टार्ट करते हैं, देखी जाएगी। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं, किसी ने कुछ बोला भी नहीं, मतलब अच्छी भी नहीं बोली, गंदी भी नहीं बोली, बट ठीक है। एक वो चीज में ट्राई करी तो हमें पता लगा कि नहीं यार कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। तो जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे पता कैसे लगेगा, ठीक है। नीश की मैं बात करूं, आई वाज मोर इंटरेस्टेड कि मैं व्लॉगिंग कंटेंट बनाऊं, राइट। अभी भी आप कभी देखते हो कि मेरे चैनल पे आपको कोई ना कोई व्लॉगिंग की रीसेंट वीडियो व्लॉग ही था, है ना। तो मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड था कि मुझे व्लॉग्स बनाने हैं, मुझे एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाना है, क्योंकि जो कंटेंट मैं कंज्यूम कर रहा था वो ज्यादा कंटेंट यही था। अगर आप ऋतिक अगले 5 दिन के लिए अली अब्दाल का कंटेंट देखने लग जाएंगे, ठीक है, तो आपका मन क्या करेगा कि यार मुझे प्रोडक्टिविटी वाला कंटेंट बनाने में ज्यादा मजा आएगा, मैं वो बनाता हूँ। जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे होंगे वही आपका मन करेगा चीजें करने को, ठीक है। अगर मैं क्यूरियस हरीश की वीडियो देखने लग जाऊं बहुत सारी, हर दिन, तो मेरा इंटेंट भी स्टार्टअप्स की तरफ ज्यादा होने लग जाएगा। मेरा मन करेगा कुछ अपना खुद का करते हैं यार, स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस में जाते हैं। तो आप जो कंज्यूम करोगे आप वो बन जाओगे, ठीक है। ये एक चीज है। उसके बाद आपका मेन क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से स्किप कर गया, क्या बोला था आपने? His question is related to what's your mindset right now. माइंडसेट राइट नाउ यार देखो, सिंपल सी चीज है। इफ यू हैव द स्किल्स यू आर कॉन्फिडेंट, राइट। लेट्स से कि आपने बहुत ज्यादा कोडिंग की हुई है, आप कॉम्पिटिटिव कोडर हो, आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छी रैंक पर बैठे हो, राइट। सो मैं आपको बोलता हूँ कि यार आपका अगले आधे घंटे के अंदर एक इंटरव्यू है जहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीएसए के, आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल सेंस में देखूं तो क्या हुआ है कि एक लड़के ने रिजाइन किया है, और इंडियन सोसाइटी के अंदर एक जॉब जहां पर आप 1.25 लाख से ऊपर कमा रहे हो पर मंथ, उसको छोड़ना अपनी मर्जी से बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। बट अगर आपको ये पता है कि यही जॉब मेरा जब मन करेगा मैं तब ले लूंगा, तो क्या उसको जॉब छोड़ने में आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप इसको जब मर्जी ले लोगे। आप कभी भी क्यों ले पाओगे इसको? क्योंकि आपने कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं और आपको उन पे कॉन्फिडेंस है, हाँ या ना? ठीक है। तो जब आपको पता है कि मेरा कल मन करेगा मैं कल ले लूंगा, मेरा परसों मन करेगा परसों ले लूंगा, 6 महीने बाद मन करेगा इससे डबल सैलरी भी जॉब ले लूंगा,
आप नहीं डरोगे, डर ही नहीं सकते आप। तो ये माइंडसेट है मेरे हिसाब से, और माइंडसेट आपका तब स्ट्रांग होगा जब पीछे कुछ बैक करने के लिए होगा, और पीछे बैक करने के लिए आपकी स्किल होगी। ठीक है, स्किल बैक करेगी आपको हमेशा। और एक एडवाइस मैं आपको यहाँ पे देता हूँ फ्री का, जो किसी ने मांगा नहीं है, कि कोई इंडिविजुअल आपकी बैक नहीं करने वाला है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल आपको बैक करने नहीं वाला है जिंदगी में। आप आगे जाओगे, कोई बैक नहीं करेगा, ना तो बब्बर भैया करेंगे, ना तो ऑडियंस में कोई करेगा, कोई भी नहीं करेगा। आप अकेले खड़े हो, बस आपको ये देखना कि आपका स्किल क्या क्या पड़ी हुई है और उसको यूटिलाइज करके आप आगे जाने वाले हो। वो सिंपल सी चीज है, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। आगे चलते हैं। या सुदीप्ता कश्यप, हेलो भैया। हाय ब्रो। भैया आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप दोबारा से स्टार्ट करते तो आप डेवलपमेंट को ज्यादा प्रेफर करते, तो आप इसके लिए कोई रोड मैप दे सकते हैं हमें कि हमें क्या क्या करना चाहिए? जैसे मैंने कुछ दिनों पहले वेब और एंड्रॉइड में बहुत कंफ्यूजन था, तो मैं दोनों एक्सप्लोर करता था, फिर लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, सेम यार, सेम डाउट मेरे टाइम पर भी था। आई वॉज कंफ्यूजन दीज टू थिंग्स ओनली, यार वेब करूं या एंड्रॉइड करूं क्या। और मन में ज्यादा कि करना इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट रिज्यूमे में डालने हैं, सिंपल। वहां पर उस टाइम पे ये नहीं था कि यार करना है क्योंकि कुछ तगड़ा बनाना, नहीं। नॉर्मल दिमाग में कि मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि रिज्यूमे में कुछ डालना पड़ता है, ये नहीं डालूंगा तो खाली हो जाएगा, क्योंकि इंटर्नशिप तो लगी नहीं है। सो मैंने वेब स्टार्ट की। आई स्टार्टेड विद वेब डेवलपमेंट, डाउनलोडेड सम कोर्स फ्रॉम दोज प्रेस्टिजियस वेबसाइट्स जो हमें फ्री में कंटेंट देती हैं। एंड वहाँ मैंने 7-8 दिन दिए। अब मुझे लगा कि नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, तो एंड्रॉयड स्टार्ट करते हैं। सो हमारे शर्मा जी हैं, उनका भी चैनल आपने देखा होगा। सो उनसे मेरी बात हुई, उनसे बोला, मैंने पूछा कि यार एंड्रॉयड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? उन्होंने नहीं भाई बिल्कुल मत करिए, जो मर्जी हो मत करिए। तो मैं नहीं, ट्राई तो करनी है एक बार। So I started with those courses, Udacity courses, free courses. I have, already made a roadmap on that too, listing them all the courses in that particular roadmap. So I was kind of, interested in these things because आप डेवलप कर रहे होते हो, और वो चीज का आप, मतलब मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था कि मैंने कुछ डेवलप किया है, मैंने उसकी एपी के फाइल बनाई है, मैंने उसको अपने एंड्रॉइड फोन में डाल के चला के देखा कि मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है। So that kind of, gave me a kick to enter into the Android development domain. That is the only thing that you can do to decide which domain you can choose, and you can perform better in that particular domain. Regarding the roadmap, I think I have already made both the roadmaps for the web development and the Android development, so you can have a view. Give me a second. Such a stereotypical view. Yeah, so I think that's the thing. I have already made a roadmap, and this is a strategy you can follow. ठीक है भैया। और भैया मैंने मतलब स्टार्टिंग में जावा से शुरू किया था, फिर मेरे कॉलेज में C++ चल रहा था, तो फिर दोनों में कंफ्यूजन हो गया, फिर मैंने C++ कर ली। तो ये चीज को कैसे दूर करूँ, मतलब मैं एक फिक्स लैंग्वेज में कैसे बैठ सकूं? I think यार you can choose any language. आप C++ के थ्रू जा रहे हो, आप वो कर लो। आप जावा के थ्रू जा रहे हो, आप वो कर लो। ये आपका सिर्फ एक वे है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को बताने वाले हो कि आप भाई तू ये काम कर ले। अगर आपने कोई एक लैंग्वेज मास्टरी हासिल कर ली है, आपको सेकंड लैंग्वेज खत्म करने में 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। अगर बहुत ही मजे में चल रहे हो तो 1 हफ्ता, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। सिंगल लैंग्वेज मास्टर कर लो, उसका जितनी भी लैंग्वेज है अपने आप सब आपको आ जाएगी। आई स्टार्टेड विद C++। मैंने आज तक कोई भी इंटरव्यू, जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, कोई भी जावा में नहीं दिया है, सारे के सारे इंटरव्यू C++ में ही दिए हैं। मैं आज भी इंटरव्यू देता हूँ, मैं C++ में देता हूँ। मैंने पिछले 2 साल में 2 साल 2 महीने में जितना काम अमेजोन में किया है, वो सारा का सारा जावा में किया है। C++ की एक भी लाइन यूज नहीं किया, और दोनों चीजें अलग है। 2 साल का एक्सपीरियंस जावा का है, बट आई एम मोर कंफर्टेबल इन गिविंग इंटरव्यूज यूजिंग C++ ओनली, राइट। तो आप एक पकड़ लो और उसमें चैंप हो जाओ। इसमें हम एक लाइन यूज करते थे आज से 1.5-2 साल पहले, किसी को याद होगी तो बताना चैट में। ठीक है भैया, थैंक यू। Cool. I'll ask Nidhi to unmute. हेलो भैया। हाँ निधि। मेरे को ये पूछना था कि काफी लोग होते हैं जो कहते हैं कि YouTube चलाने से कंसिस्टेंसी आती है, तो ऐसा होता है? YouTube चलाने से कंसिस्टेंसी नहीं आती है, कंसिस्टेंसी माइंडसेट से आती है यार।
कंसिस्टेंसी माइंडसेट से आती है। यूट्यूब चैनल से अगर आप देखोगे मेरे चैनल को लास्ट 2 महीने मैंने सिर्फ 2 वीडियोस डाली है, तो कंसिस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। नहीं, जैसे कि आप अगर कुछ कर रहे हो, ठीक है, अगर सपोज मैं C++ कर रही हूँ, मैंने आज डिसाइड किया कि मेरे को टॉपिक पढ़ना है, बट कभी कभार होता है जैसे फेस्टिव सीजन आ गया तो मैं स्किप कर दूंगी 4 दिन शायद से। तो अगर मैं यूट्यूब, मेरे को पता है कि मुझे कल 7 बजे वीडियो डालनी है, तो वो प्रेफर करेंगे? आप यहाँ पर यूट्यूब को और कोडिंग को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज मान लो मुझे पता है कि यार अब नवंबर में दिवाली आने वाली है और मुझे पता है कि मेरा 1 हफ्ता खराब होगा, ठीक है, तो मैं यूट्यूब में क्या कर सकता हूँ कि मैं अक्टूबर के अंदर ही कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस बना कर रख सकता हूँ और उनको मैं बाद में शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है। तो मान लो दिवाली के दिन भी वीडियो आ रही है, बट वो जरूरी नहीं कि दिवाली के दिन शूट हुई हो, वो किसी और दिन शूट हो सकती है ना। बट आप कोडिंग ऐसे नहीं कर सकते ना कि दिवाली के 4 दिन आ रहे तो मैं आज 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज्यादा कर लेती हूँ। हाँ हाँ, बर्नआउट नहीं होना ना अपने को मजे मजे में चिल चलना है। अगर मैं हर दिन 6 क्वेश्चन करता था, अब दिवाली का टाइम आ गया है, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैं किसी तरीके से 15 मिनट या आधा घंटा दे दूं ताकि मेरा एक फ्लो बना रहे। 15 मिनट आधा घंटा देना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप निकाल लोगे, है ना। या तो मिड नाइट आप 15 मिनट आधा घंटा निकाल लोगे, या तो आप जल्दी उठ के निकाल लोगे, पर निकाल लोगे। ठीक है। और भैया, आपने रिएक्ट किसी कंपनी में जाके सीखी है या फिर पहले सीखी थी? मुझे वेब डेवलपमेंट का डब्ल्यू भी नहीं आता था, मैंने सब कुछ जो है यहाँ पे आके सीखा है अमेजोन के अंदर, पूरी की पूरी वेब। मुझे एंड्रॉइड आती थी अच्छे से, पर एंड्रॉइड मैं एक बार भी यूज करने का मौका नहीं मिला। एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक मैंने पोस्ट देखी थी लिंक्डइन के ऊपर, वहां पे किसी ने बोला था कि लव बब्बर ने हमारे इंस्टीट्यूट से वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है। मैंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया भाई, वो जो भी बोला था झूठ बोला था। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। Well, how much more time do we have? I think we have around 20 minutes more. Oh, damn. So we'll take a lot of questions. Shubhranil, maybe you can go. I cannot hear you. Oh, he's lagging. Yeah. Take someone else. Just one CSA. हेलो। हाय Hey. यशवंत। तो भैया, आपने अभी बताया कि आपने सभी इंटरव्यू C++ में ही दिए हैं, बट आपने स्किल सारी मेंशन की हुई हैं रेज्यूमे, तो इससे क्या डिफरेंस आता है या कुछ प्रॉब्लम होती है? क्योंकि आप कह रहे हो कि C++ में इंटरव्यू दे रहे हो और उसमें कंफर्टेबल हो, तो बिल्कुल। तो फिर अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या आपने कुछ फेस किया है कि ऐसा वो पूछता है तो आप कहते हो कि नहीं मैं उसमें जवाब दूंगा? नहीं नहीं नहीं, अगर आपने जावा में काम किया हुआ है या फिर आपने जावा अपने रिज्यूमे में मेंशन किया हुआ है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर आपसे कल को पूछा जाए कि बेटा ये बताओ कि C++ जावा में क्या डिफरेंस है, तो आप बता पाओ। आपसे पूछा है कि बेटा गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, आप बता पाओ। आपसे अलग अलग चीजें पूछी जाए प्रोजेक्ट के रिलेटेड, कि मान लो आपने कुछ एंड्रॉइड प्रोजेक्ट बनाया, आपसे बोला कि एसिंग टास्क क्या होता है, लोडर्स क्या होते हैं, तो आप बता पाओ। अब ये ना बोलो कि सर मैं तो C++ में इंटरव्यू देता हूँ इसलिए मैं दूंगा नहीं। जब मैं बोलता हूँ कि मैंने C++ में इंटरव्यूज दिए हैं, इसका मतलब है कि जब भी मेरे सामने कोई DSA क्वेश्चन आता है इंटरव्यूज के अंदर, वो मैं हमेशा C++ के थ्रू सॉल्व करता हूँ। मैंने आज तक एक भी इंटरव्यू ऐसा नहीं दिया जब मैंने जावा का यूज किया हो। टेस्ट मुझे याद है कि एक बार नगैरो का टेस्ट था और उसमें बिग इंटीजर यूज करना था, तो मैंने जावा यूज कर ली थी, बहुत आसान हो जाता है ना, तो वो एक चीज है। बाकी वैसे DSA में C++ से यूज करता हूँ। बट अगर आपने लिस्ट किया है कहीं पर भी कंफर्टेबल विद जावा या फिर लैंग्वेज में जावा लिखा हुआ है, तो जावा के अकॉर्डिंग आपसे कंपैरिजन पूछा जाए, गार्बेज कलेक्शन पूछा जाए, लेमडाज का पूछा जाए, कुछ ही पूछा जाए, आपको प्रिपेयर्ड रहना है वो बताने के लिए। आप ये नहीं बोल सकते मुझे नहीं आता। वो बोलेंगे भाई तू जाता नहीं, तूने प्रोजेक्ट कैसे बनाया? फिर आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। Cool. Maybe you can go ahead with Siddharth. हेलो भैया, मैं अभी कॉलेज ज्वाइन किया हूँ, मैं फ्रेशर हूँ। तो मेरा डाउट था कि दिन में कितने घंटे तक मुझे पढ़ना चाहिए और कितने घंटे मुझे कोड करना चाहिए हर दिन। कॉलेज के लिए पढ़ना कह रहे हो आप? कौन सा कॉलेज है? जी KIT। यार आपकी आवाज आ रही है साहब। भैया आ रही है? Yeah, but background Sir? disturbance. ओह सॉरी। College का मैं नाम chat- बोलो बस। KIIT। Oh, cool. KIT को स्कॉलरशिप भी होती है ना, यूडासिटी पर आती है ना, ये KPIT की होती है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, रिपीट करना एक बार यार।
जी भैया, क्वेश्चन था कि हर दिन मुझे कितना देर पढ़ाई के लिए देना चाहिए, कॉलेज की पढ़ाई, और कितना देर मुझे कोडिंग को देना चाहिए? तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना करना है, ठीक है। क्योंकि मैं एक शेड्यूल आपको बना के दूँ हूँ, अब की आपकी अपनी एक स्ट्रेंथ होगी, मेरी अपनी एक स्ट्रेंथ होगी, वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, है ना। जो मैंने किया उससे थोड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हो, उसके बाद में अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। और जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ यार, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, इससे कोई ऑफेंड मत हो जाना कि यार कि मेरे को आप भैया लल्लू समझ रहे हो, खुद को आप समझदार समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो मेरे साथ हुआ या मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं आपको वही बताने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं पढ़ाई के रिगार्डिंग। तो जो मेजोरिटी करती है कॉलेज में आके, मेजोरिटी क्या करती है कि आपके कॉलेज से आपके एग्जाम से एक हफ्ता पहले आप बैठते हो और पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करते हो, जाके पेपर दे के आते हो। अब मैं यहाँ पे किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई एक हफ्ते पहले बैठो, उससे पहले पढ़ो ही मत। मैं कह रहा हूँ कि मेजोरिटी आपके कॉलेज में ये कर रही होती है, क्योंकि आपका जो करिकुलम होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ जो हमारा जो करिकुलम था, वो इतना लायक नहीं था कि उसमें हम पूरा सेमेस्टर टाइम व्यतीत करें और पेपर दे के आए, क्योंकि उसका फायदा ही नहीं है। वो चीज़ कभी यूज ही नहीं हुई, 2.5 साल हो चुके मुझे, आज तक कभी यूज नहीं हुई है ना। मैं अपने करिकुलम की बात कर रहा हूँ। बाकी अच्छे अच्छे कोर्सेज भी थे उसके अंदर, जो आपके होते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड वगैरह वगैरह वगैरह। वो चीज़ जो होती है प्रैक्टिकल यूज होते हैं यार, थ्योरी का उसमें कुछ फायदा होता नहीं है। तो मेजोरिटी करती है वो यही करती है कि यार अपना एग्जाम से एक हफ्ता पहले आप बैठो और पूरा का पूरा निपटा दो, ठीक है। आइडियल वे क्या हो सकता है भैया? आइडियल वे ये हो सकता है कि आप अपना 1 घंटा दे दो। अगर आप दिन में 1 घंटे का जो कॉलेज में कराया उसको रिवाइज कर लोगे, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। 1 घंटा बहुत ज्यादा बात है, आइडियल वे है। इसलिए 1000 में से कोई एक बच्चा ऐसे कर लेता होगा कि रोज पढ़ने बैठे कॉलेज के सब्जेक्ट्स को, मुझे लगता नहीं ऐसे कोई करता होगा। मैंने आपको बता दिया, मेजोरिटी वो करती है। आइडियल भी है कि अब दिन का 1 घंटा आधा घंटा दे दो, बहुत होता है, ठीक है। कोडिंग की हम बात करते हैं। कोडिंग के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप 4 घंटे दे सकते हैं, 3 से 4 घंटे कोडिंग क्वेश्चंस को? अगर हाँ तो मजा आ जाएगा। सिंपल सिंपल लॉजिक एकदम, ठीक है। स्टार्टिंग में आप 3-3 4-4 घंटे देने शुरू करो, एक बार आपकी रिदम बन जाएगी, 1-1.5 महीना आपकी हैबिट बन जाएगी। उसके बाद आपकी क्या बोलते हैं, लॉजिक मेकिंग स्किल्स बढ़ जाएगी। तो आप हो सकता है कि 2 घंटे के अंदर 3-4 क्वेश्चंस कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में मतलब 3-4 घंटे बैठो आराम से यार। और मेरा जो स्ट्रेटजी था वो ये था कि अपना 5 दिन बढ़िया कोडिंग वगैरह करो, डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और सैटरडे संडे डेडिकेट करो डेवलपमेंट को। वहां पे आप बैठ के अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो, डेवलपमेंट में आपका टाइम ऐसे जाता है, पता ही नहीं चलता है, बहुत जल्दी चला जाता है। तो मुझे याद है जब मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट करता था कॉलेज टाइम पे, तो आपके 7-8 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीज आपको किसी टीचर ने करने को नहीं दी है ना। वो चीज आप किसी कॉपी करके भी नहीं कर रहे हो। आपने क्या किया है, किसी पर्टिकुलर आइडिया पे खुद ही काम कर रहे हो कि इसको मुझे बनाना है। तो अब ऐसे जब अपने आइडिया पे काम करते हो तो फिर आप 7-8 घंटे आराम से निकाल लेते हो, और आप सोचना नहीं पड़ता आपको कि यार 1 घंटा हो ज्यादा हो गया, 2 घंटे हो गए, इस तरीके से। Just continuation to this, how much does CGPA even matter in placements or in college life later on? ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बहुत मैटर करती है, बिकॉज योर कॉलेज इज गोइंग टू डिसाइड कि किस कंपनी के लिए कितना मार्क मुझे रखना है, राइट। इंटर्नशिप में बार थोड़ा ज्यादा होता है, प्लेसमेंट में बार थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप सबकी नहीं लगती है। और अगर मैं Tier 1 कॉलेज की बात करूं तो वहां पे प्लेसमेंट सबकी नियरली लग ही जाती है, ठीक है। अगर मैं Tier 2 और Tier 3 कॉलेज की अगर बात करता हूँ, तो इतना मैंने बच्चों से बातें की हैं, और तो मुझे पता लगा कि कंपनीज आनी शुरू हो गई है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो है, आ जाती है अच्छी कंपनीज, कभी कभी आ जाती हैं, बट दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द ऑफ कैंपस थिंग ओनली। तो वहां पर मेरे हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कंपनीज का डिफरेंट, किसी का 55%, किसी का 60%। अगर आप उसको फुलफिल कर पा रहे हो Is it just me? No, Yes. I guess he got disconnected. I don't know. Yeah, maybe he lost his internet. Hello. Yeah, we're back. ओके। आप ऑफ कैंपस पे थे। हाँ, तो मैंने कहा कि ऑन कैंपस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको बीट करने अपने कॉलेज के बच्चे, क्योंकि पहला स्टेप आपका वही है। फर्स्ट आपका परसेंटेज शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू आप जो भी आपका गूगल फॉर्म है, अभी जो भी आपका कॉलेज का इंफ्रा है, उसके थ्रू अप्लाई करने वाले हो। सेकंड स्टेप आपके रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है।
ठीक है। मेजोरिटी में शायद कॉलेज में हो ना ही हो, अगर परसेंटेज के बेस पे आपको आगे टेस्ट का लिंक आ जाए, फिर टेस्ट आप क्लियर करते हो, फिर आप इंटरव्यूज में जाते हो। तो ये कुछ कुछ आपका स्टेज रहता है। Joel, maybe you can unmute. Joel. Hi Joel. Hello, bro. Hi bro. There are apps like App Builder, Bikai, App Maker, etc. Is the app made from them worse than the apps made from coding? Bro, can you repeat? I lost the last part. The apps like App Builder, Bikai, etc. Is the app made from them worse than the apps made from coding? I have not tried these frameworks to build apps. I'm not sure about it, like how they work and how what kind of apps they produce. So can't comment on that. Not aware about it. Okay. I have another question, bro. Yeah. Hello? Yes. Yeah, go on. Hello? Yeah, bro, you're audible. Please. I go on. think we. Yeah, Joel, go ahead. Let's take someone else. Devansh Pradhan, maybe you can go ahead. हेलो भैया। Hi, bro. भैया अभी आपने पिछले 5 मिनट बात की अपने कॉलेजेस के बारे में। बीइंग फ्रॉम अ टायर 3 कॉलेज, व्हाट डू यू थिंक कि हमें अपने कॉलेज पे फोकस करना चाहिए या अपनी स्किल को डेवलप करने पे? और अगर स्किल डेवलपमेंट में है तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग या ट्रूली मतलब कि स्किल ही डेवलपमेंट करने, इंटर्नशिप को फोकस करते हुए? देखो, फर्स्ट पार्ट जो है वो डीएस आपको करना ही करना है। आप चाहे टीयर 1, 2, 3 कहीं के भी आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने वो वाला पार्ट डन कर लिया। अब आप कहते हो कि भैया मेरे पास 2 चीजें हैं, या तो मैं डेवलपमेंट में घुस जाऊं या तो मैं सीपी में घुस जाऊं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि डेवलपमेंट में आपको घुसना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो मैंडेटरी है। भैया क्यों घुसना पड़ेगा? क्योंकि आपको अपने रिज्यूम में प्रोजेक्ट्स डालने हैं, है ना। क्योंकि आपका रिज्यूम में जब आप बिना प्रोजेक्ट के देखोगे तो कुछ भी नहीं होता। इतनी जगह घेरता है वो, आपको इतनी सारी भरनी है, इतनी से में कुछ नहीं होगा। सो डेवलपमेंट में आपको घुसना ही पड़ेगा। और दूसरा फायदा क्या है कि जब आप कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं तब आपको वहां पे डेवलपमेंट करनी है, आपको सीपी नहीं करनी है। ठीक है, सीपी करके कंपनी क्रैक करना, अगर आप तगड़े सीपी वाले हो कर लोगे, ठीक है, बट वहां पर जाके डेवलपमेंट करना वो डिफरेंट चीज है। तो डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सस्टेन, राइट। तो डेवलपमेंट भी करनी ही पड़ेगी, प्रोजेक्ट बनाने हैं और सस्टेन करना आगे जाके। फिर आते हैं सीपी पे। भैया सीपी करूं कि नहीं करूं यार, मतलब पूरा सीपी में जाऊं या छोड़ दूं? मैं ये बोलूंगा कि छोटा सा टेस्ट ले लो। आपका एम है कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, मैं बोलूंगा कि छोटा सा टेस्ट ले लो। छोटा टेस्ट क्या मतलब है भैया इस बात का कि मैंने हर कॉन्सेप्ट के 5-10 क्वेश्चन कर लिए, मुझे पता लग गया सीपी क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं। मैं चैम्प तो नहीं हुआ पर मुझे आइडिया लग गया ऐसा ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ से आप माइंड बनाओ कि क्या मैं फुली जाना चाहता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर सीपी में बड़ी रैंक बनाना चाहता हूँ, बड़े जो आपके बैजेस होते हैं वहां पहुंचना चाहता हूँ, कैंडिडेट मास्टर बनना चाहता हूँ, हाँ है ना। सिंपल लॉजिक है। पर ये दिमाग में ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है, मतलब सीपी मैंडेटरी नहीं है, कहीं भी ये नहीं है कि सीपी तगड़े कोडर हो तो ही आपको प्लेसमेंट मिलेगी। ठीक है, कंपनीज लाइक डायरेक्ट आई, वहां फायदा मिलेगा सीपी में अच्छे हो तो, बट वो तो कुछ कंपनीज ही है ना, मेजोरिटी तो वही वाली है ना जहाँ पे डीएस और डेवलपमेंट कॉम्बो चलता है। तो वहां मेरे हिसाब से फायदा आपका ज्यादा होगा। और नेटवर्किंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप टीयर 2 टीयर 3 के बच्चे हैं, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए ना। अगर आपके पास तलवार है तो उस तलवार चलाने के लिए मैदान भी तो चाहिए, कहीं पे कुछ चलाओगे। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अपनी स्किल्स को दिखा के आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओ कि हाँ यार भैया मेरा अमेजोन में इंटरव्यू या फिर रेफरल करवा दो यार, एक टेस्ट लिंक दिलवा दो, उसके आगे मैं खुद देख लूंगा। ठीक है, तो वो भी चाहिए। तो उस चीज का ध्यान रखना है। टीयर 3 के बच्चों को सबसे तगड़ा एडवाइस ये होगा मेरे एंड से कि नेटवर्किंग में चैंप रहो यार, कि आपको आगे जाके ये ना सोचना पड़े कि मुझे XYZ कंपनी में इंटरव्यू प्रोसेस में कैसे घुसूंगा। आपके पास 10 लड़के होने चाहिए, अमेजोन के ये 10 दोस्त बना रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ये 10 दोस्त बना रखे हैं, या फिर ABCD कोई भी कंपनी, जरूर नहीं फैंग, कोई भी कंपनी बना रखे हैं आपने दोस्त, उनको आप बोलोगे आपको रेफर कर देंगे, आप पहुंच जाओगे इस प्रोसेस के अंदर। वो इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना है यार। थैंक यू यार। ओके ब्रो।
Cool. Let's take one more question and then let's end this. Yeah, Narendra, maybe you can go ahead. Hi, Andrew. Hi, can you hear me? Yep. Okay. So I just wanted to ask, like, I currently have 2 years of experience, and I don't know how many people are here having the same experience as mine. But I currently hold an offer from a startup, which is a product based, and also I wanted to ask, like, how, like, if you had such an opportunity where you have a startup which is product based and an offer from, let's say, you currently have an offer of Flipkart. So what you will prefer here? Like, what parameters you will go through if you are opting for that startup? So I'm currently, I think, in the same situation. Flipkart's work culture is same as a startup at this point too. So I had a conversation with the hiring manager, with the recruiter too. So they told me that there's not a well-defined process that you have to do A, B, C, D, and done. No, we are still in a hurry. We are still, not following the process. So it's kind of a startup culture there at this point too. Second, Microsoft, that thing is well defined, right? We have to do A, B, C, D, and you're done. So both are, I think that is the same situation you're talking about, right? Yeah. Yep. So in that case, you know that your startup is going to pay you more. So when I compare these two offers, the difference in the in-hand cash is more than 8 lakhs, right? Now, things comes down to, the personal preference thing. So my personal preference is I want to have some free time which I can utilize to make videos, right? Let's say I step into Flipkart and working in a startup culture. डेफिनेटली बहुत बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा, डेफिनेटली बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, डेफिनेटली आगे मैं कहीं खुद का कुछ करना चाहूँ या किसी और जगह चाहूँ, मुझे बहुत फायदा होगा, क्योंकि जब मैं उनको स्किल दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा, मजा आएगा बहुत ज्यादा, है ना? सेकंड, बट जब स्टार्टअप कल्चर में आप काम कर रहे हो, आपका फ्री टाइम नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ द टीम मेंबर in Flipkart. So the team is a promise engine. We decide how many time your shipment will take to reach your home. So he told me that भैया यार हम तो कभी भी काम कर लेते हैं, अभी कल हमारी एक टिकट आई थी, हम रात को 1 बजे टिकट सॉल्व कर रहे थे। मैंने कहा भाई हेलो, ये नहीं करना मुझे मुझे वीडियो बनानी है। सो दैट इज द थिंग। आई थिंक बहुत लोगों को ये चीज अच्छी भी लगती है। कुछ लोग होते हैं जिनको कोडिंग करने में मजा आता है, डेवलपमेंट करने में मजा आता है असलियत में, तो वो इसको एंजॉय करते हैं। वो ये नहीं देखते कि मुझे 8 बजे काम करना पड़ रहा है, मुझे 1 बजे काम करना पड़ रहा है। बहुत से लोगों को मजा आता है, उनको आप 3 बजे रात को जाओगे, उनको खुशी से कर लेंगे काम, ठीक है? तो किसी ऐसे बच्चे से मैं बात कर रहा था, राइट? सो दिस इज द स्टार्टअप कल्चर, राइट? पैसे भी आपको ज्यादा मिलने वाले हैं, आपको लर्निंग भी बहुत ज्यादा मिलने वाली है, बट शायद आपको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। मैं शायद लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? शायद आपको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। अब जाते हैं वेल सेटल्ड कंपनीज में, एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट। अब जब मैं किसी से बात करता हूँ, मैं उससे पूछते हैं यार कल्चर कैसा माइक्रोसॉफ्ट का। सो मेजॉरिटी अराउंड 95% सेज कि यार सरकारी नौकरी वाला हिसाब है, मतलब काम दिया और तेरा मतलब 3-4 घंटे में काम हो जाएगा एंड उसके बाद तो फ्री है, राइट? अब इमेजिन अ पर्सन हु इज अ स्मॉल यूट्यूबर लाइक मी एंड इंटरेस्टेड इन मेकिंग वीडियोस, सो आई नीड if I get around 2-3 hours free in a day which I can utilize to make videos, I will definitely prefer that thing over that gap of that 8 lakhs, right? Because that utilizing those 2-3 hours, I will definitely improve my soft skills, improve my connection, improve my networking, and also I can earn more than that 8 lakh gap. It may happen that 8 can be converted to 80, right? So that thing depends on personal preference. So deciding whether to choose A or whether to choose B depends on your personal preference. I cannot comment on that, right? But you have a clarity now. How are the well-settled companies and the startup things? Yeah, and let me tell you one more thing. I don't know because I'm currently in a service-based company. There I got a lot of free time. So in that free time, I got cleared with AWS certifications.
So I am currently holding 3x AWS certified. But I am also doing projects side by side every month, and I am also updating my LinkedIn so that I will get into those product-based companies. Great. And I am not that much interested in coding as such, but I want to get into cloud or data engineering kind of side of things. So Yeah. how like a referral process is also important in this, right? Yeah. LinkedIn also helps. Yep. I think I can suggest you a channel. Its name is, I think, E-Learning Bridge. Shashank Mishra or Shashank Jha. I think he's the one who is currently working in Amazon as a, I think, data engineer. You can connect with him. He can get you Okay. more on that data domain part. Okay. You can basically compare both the profiles of SD and the data engineer thing. Okay. Yeah. Thank you. Okay. And I am watching your videos, and I saw your couple of road map videos that helped me clear the interviews. That also I want to mention over here. Thanks. That's great. That was the intent. Cool. Just one last thing. Just drop your email in the chat if you can. Yeah. A lot of people have been asking for that. Yep. So it is lovepupper3@gmail.com. Is it visible? Yep. Great. Yeah. Another thing, I've put a link like 5 minutes ago in the chat regarding a feedback form for the community. It helps us improve these events. And thanks for coming, Love. To everyone who's watching, put out a tweet, put out an Instagram story if you can. Tag Love, tag me, tag Bluelearn, tag us. Let others know about this as well, and so that, to be honest, just so that more people can join this. And once again, thanks, Love, for coming at this time. We're doing this from 8:30 to 9:30. Like, it's the peak rush hour. And just thank you once again. Not an issue, bro. Thanks for having me. It's a great experience. Always interacting with the students and people working in the community and in the corporate world. So I love this experience. I would love to come again and interact with people. Thanks for the experience. Oh, definitely. Yeah. Thank you. Goodbye. Goodbye to everyone. Good night. You guys can leave. I think Yash is AFK right now, and he'll end the meeting like 5 minutes later. So, cool. Okay, yeah. guys. Bye. Yeah, thank you, Love, once Bye. again for this amazing session. I'll keep the meet for a few time. Yeah. Yeah, sure, bro. Bye-bye. Bye. Guys.